Yeah. So I will give you all. Um, Hi everyone. I'm Mayank, and for those of you who are joining today, I am. I work at IGNCA. I'm a hobbyist calligrapher, and currently we are going to learn Devanagari calligraphy. So we haven't really, covered a lot of syllabus at the moment. It's just the basic strokes. So I'll give you all a brief recap so that we are all on the same page. So I'll run you through all the basic strokes. And for this calligraphy workshop, I am using this column. Uh, you can see there's a slant. There's a slight slant in this pen. This, it's not straight. It has a 45-degree cut. So for Devanagari calligraphy, we need this kind of pen. We don't need a flat nib. We need a slant flat nib with a 45-degree cut. And the closest alternative to this is if you're from India, then I recommend everyone to use these markers. It's called stick bolt markers. They are chisel tip. You might have seen this. It's quite popular brand in India. So you have this 45-degree cut, if you can see here. So this cut is essential for writing in calligraphy. So I have two at the moment, red and black. So we have to use this pen at a certain angle, and calligraphy, I mean, just to clear it for you, is not handwriting. It's different from handwriting because handwriting is straight out of your mind and it doesn't have any filter. But for calligraphy, it is essential to follow certain rules, and then mixture of strokes together form an alphabet. So you have to practice different strokes that make up an alphabet. So I'll give you a demonstration of how this thing works. So I hope all of you remember this graph from school: x-axis and y-axis graph. And you will remember this is positive, negative, positive, negative. And what we are looking at this angle, which is negative 45 degree. That's where Devanagari is written. So what I'm doing is I am aligning the pen with this line. Okay. Um, I'll for your reference, I'll draw this line. So this line is essentially the backbone of Devanagari calligraphy. So you have to align your 45-degree cut according to the angle, like this, like I'm doing here. So I'm aligning it here and then joining it on the line. So I keep it on the line like this. And then from here, I am actually making a straight stroke. But this straight stroke will have some sort of angle like this. So you see one point is here and the other one is here. Similarly here. So you need to make sure all the lines that you make have this 45-degree cut. If I make a graph, so I should be able to see negative 45 degree on my angle. So the first and foremost stroke of this Devanagari calligraphy is a straight stroke like this.
आदित्य मैम मेरे बारे में इतने कुछ बोलते क्यों हैं कसम से? मैं एकदम आग क्यों किया है? मेरी शक्ल देख के उन्होंने ऐसे क्या I'm बोल sorry, somebody's. Yeah, thank you. So I'm just trying to make a straight stroke, but if you look closely, it's not entirely straight from the starting and the bottom. It has an angle. So you will see this angle everywhere. And this is the first stroke. The second stroke, however, is more, I mean, this one is horizontal, this one is vertical. So these two are quite essential for any alphabet formation in Devanagari because this one, this stroke gives you Shiroreka. So if you don't learn this stroke, then making Shiroreka above the alphabets would be slightly challenging. So remember, these two strokes are uh, the first two basic strokes that you need to learn. The first thing that you need to learn in Devanagari calligraphy. Now comes slightly more complex strokes. Um, so this one I call a mountain stroke because what I'm doing is I am um, I'll be running my pen in this shape, but I will keep it at an angle, and I won't change the angle. I'll just keep my pen straight. So you have to make sure that you don't pick up your pen. You have to keep the pen down on the paper while making the complete stroke because I mean you can do it in two ways. But I prefer I whenever I teach people, I prefer them to not pick up the pen because it adds to your flow. And if you're finding it difficult, what you can do is break it down into two smaller strokes. One would be the thin stroke, like this one here, and the other one would be the thick stroke, like this one here. So you break it down like this, and then make the mountains. Is that understood? I'll move on to the next one. This is number three. Number three stroke. Now comes one of the hardest to master stroke. It's called crescent or the circle. And we have to make the circle in a similar fashion. Um, so there would be 2 points where the circle is slightly thinner, and two of the sides would be thicker than those two sides. So I'll give you an example. So the first stroke is in the crescent one, it's C. It's the alphabet C. But you see, this is the plane of the stroke. It can't be made like this. I mean, you can make it like this, but it's not ideal. It should be like this. And the second stroke that follows this stroke is the mirror image of the same stroke. So I'll make it again.
it should be big enough to accommodate one nukta. Sorry, I forgot to mention nukta. So this is an elementary form of calligraphy stroke, which is common throughout different scripts. So it's nothing but a perfect square, slightly twisted like this. So so I have to make it. So if this is the plane, so this would be a simple square that is laying on the plane, but you have to make sure this is like, I mean, it should look like diamond, like this one. So this is called a nukta, and this is used to measure the height and width of an alphabet. Um, I mean, it's there's no hard and fast rule how long or thick should an alphabet be, but I think to get an idea of how many alphabets can fit into a page, or let's say you are designing a big calligraphic artwork, you would want to use nuktas. NUQTA, or nukta. So I hope this is clear. So now I make the second stroke. So we know the first stroke is this C, and the second stroke is the opposite or the mirror image. All right. So if you make this in one go, you will get something like, this stroke, a perfect circle. One, two, and a nukta in between, right in the middle. And I'll draw the plane so that you know how the stroke actually is. Negative 45. So you have to always imagine it in this angle, because if you do not give this angle, it won't look Devanagari enough. Okay. Sir, stick markers. Okay, I will. I will use the stick marker now. So I'll repeat once again the basic strokes. Then the straight one, then the mountain, then comes the crescent. I'm just making one part of the crescent. So you need to practice it individually before you make the complete circle. And then the opposite. And then if I make a complete circle with this one, it would be like this. And I'll tell you why it is so important to learn these strokes in such a manner and at such an angle. Why is it important? I'll give you a demo of that. Um, uh, Yeah. I wanted to ask that
My crescent, somehow I'm not able to get it right with the pen. So can you please show us again that how to make crescent properly, please? Okay, yeah. Um, so I'll use a bigger pen for this one because I think a lot of people have a problem in crescent. So uh, imagine you make a C. Okay, just make a C, the English alphabet, but you have to make it look like first draw a graph, make the 45-degree angle. Okay, so you would usually make C like this. Okay, this is the English alphabet C. But instead of like this or making it like this, you twist it and try to fit it here. Does that make sense? I'll make it, I'll enlarge it. So the angle first, and then I keep my pen here like this. And before you make this stroke, um, just think about where would your stroke end. So you have to make an equal stroke. It should be equal from both the sides. I mean, roughly equal. It shouldn't be like a hard and fast rule, like 6 by 6 centimeters. It's not like that. It should roughly be equivalent to each other. Sorry, is that a question? Okay. So I will try to make a crescent again. So first divide it into two parts. The first stroke is this, and then comes the second stroke. So what I'm doing is I'm making one of this stroke and then following it up with the next stroke. And similarly, you can do one this stroke and this stroke. So one, two, three, four. So you break it down into four segments. But you see, the crescent has these two sides which are thin. It's not thicker like these. These are much thicker. So you need to make sure these two sides are always thinner. And to know if it's equidistant, it should there should be a line going from the middle and it should join. I'll make it again. Is it clear now? Or do you want me to make it again? Yes, yes, it's clear. It's clear now. I will still try to make it once more for people who are still finding it difficult because I know this one takes a lot of time to master. So I'll make it again for you. The sound of the kalam is called sarir. Sarir. It's similar to sharir, but it's not sha. It's sa. Once again,
And you might be wondering, um, like, where are these strokes used? Okay. So these strokes are used in quite a lot of alphabets. And I'll tell you, I'll make some that has crescent in it. So the first one is ka. So ka has the vertical stroke that we just practiced, the straight stroke. And then from here, there are two crescents that are joining each other and making an incomplete infinity. So the infinity looks like this, but this is incomplete. So again, the same angle, the same this angle we have to follow. You align it like this. 1, 2, 3. Va, ba also has this crescent. Ba. I'll make a va with it because that also follows the same stroke. Is that clear enough for you? If yes, we can move forward. Sir, I have a question. Yeah, please. सर 45 डिग्री पे पेन मार्कर को रखते हैं तो माउंटेन नहीं बन पा रहा है सर। माउंटेन पहले वो मोटा आ जा रहा है। आपको पेन देखिए, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पेन आपको दिख रहा है, ठीक है? तो ये पेन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ऐसे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर आप इस एंगल को नहीं छोड़ेंगे ना और अपने पेन को नहीं हिलाएंगे, चाहे वो मार्कर हो या कलम हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ उससे कि जब आप पेन का एंगल हटा दो। अब आपको इतना पता है कि ये ऐसे चलना है। देखिए, इतना इतना दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है इतना? अब मैं एक बार और बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप माउंटेन बना लीजिए एक सिंपल पेन से, ऐसे ट्राइंगल्स। अब इसको क्या करना है कि कोशिश कीजिए ऐसे, सबसे पहले मार्कर रखिए ऐसे इसके साथ मिला के। तो जब आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से रख के चलाएंगे, तो सीधी लाइन तो बनेगी ना। अगर आप ऐसे मोड़ के चलाएंगे तो थिक लाइन बनेगी। हेलो? जी सर। आपको, तो सर हाँ, माउंटेन माउंटेन में तो पॉजिटिव 45 एंगल यूज कर रहे हैं फिर। आप पॉजिटिव 45 कर लीजिए, वो टेक्निकली दोनों के लिए काम आता है। आपको क्या करना है ना, देखिए, यही आपको ये चीज समझनी है कि पेन का एक स्ट्रोक पतला है, एक स्ट्रोक मोटा है, राइट? अब जब ये आप समझ जाएंगे ना ये वाली बात, तो अब मैं देखिए इससे एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो अगर मैं पतला, ये चिसल टिप मार्कर है जो आपके पास है, राइट? तो मैं माउंटेन स्ट्रोक बनाता हूं। मैं एंगल अगर नहीं हिलाऊंगा, मैं निब नहीं हिलाऊंगा,
तो ऑटोमेटिकली एक पतला आएगा स्ट्रोक ऐसे और एक मोटा स्ट्रोक आएगा। अब मैं इसी को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। अब मैं इसको ऐसे ही रख के सीधा चला रहा हूं तो पतली लाइन बनेगी, ऐसे चलाऊंगा तो थिक लाइन, ऐसे चलाऊंगा तो पतली लाइन, ऐसे चलाऊंगा तो थिक लाइन। ओके सर, थैंक यू सर। अभी अभी पॉजिटिव ठीक और हो रहा है? नेगेटिव को लेके कंफ्यूजन, जी सर, पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके कंफ्यूजन था, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नहीं उस अभी ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं। इसके अंदर अगर एंगल दूसरा भी जा रहा है तो इट्स फाइन, क्योंकि आपको दोनों तरीके, मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक्स के मिरर इमेज, मतलब जो उल्टा ऑपोजिट दिखता है वो स्ट्रोक, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज उसको अगर आप नहीं बनाएंगे तो हाथ नहीं खुलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप दोनों एंगल की कोशिश कीजिए। मैं एक बार फिर से माउंटेन स्ट्रोक बना के दिखाता हूं। अंडरस्टूड इतना? ओके सर, ठीक है। थैंक सो मैंने वावल्स कल कंप्लीट करवाए थे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स who were not present for the first two classes to please see the videos, the recordings, and मैंने कुछ PDFs भेजे हैं. So get a print out of those PDF. The PDFs are in the group chat. Get a PDF printed and practice on those sheets. So there is one master copy. It's called Aksharai. It has all the alphabets in calligraphy style. And the other one is more like a practice pad. So you can print as many as you want. So you use a similar nib. I'll tell you how to use that one. So what I've given to the in PDF version is like this. All right. So these are practice uh, calligraphy practice pads. Although this one is slightly bigger for the chisel tip marker, you have to make uh, an ice cream stick pen for this one. But I will still try to give you a demo how the book is used. All right, this should make some sense. So don't directly jump into it. Just focus on the basic strokes first for the first few days, and then move on to making alphabets. Because if you straight away jump to writing alphabets, it's going to be slightly difficult to understand the alphabets or the basic strokes used in alphabets, because there are several. So I will quickly, since half the time is over already, what I will do is I'll start with consonants tomorrow. I will just try to make these vowels again. So the first vowel is A, and we know there are four vowels starting with the alphabet A. A, A. So there are four vowels.
with the same calligraphy stroke. So the first one, for this one, I'll do this aspect. So yeah. So these alphabets are, if you can't notice, I'll make you notice. They are limited. They have a limitation. There is a box. You can fit them inside a box. All right. So we need to make sure whatever alphabet that we make should have some sort of symmetry, because this is symmetrical. And you see, there are these negative spaces in between the alphabet, like this one, these two as well. So make sure that these negative spaces, even these, the corners, they are chiseled. So this is a. Now, I mean, the other two, you just have to add two nuktas. All right. Now comes oo. Oo. Oo is very similar to this one. I'll first make it and then give you a breakdown. So Shiro Rekha, and I'm making oo. Half crescent again becomes oo. Dirgha oo is the same, but what I'm doing is I am taking this stroke, the first stroke, and using it here like this. This becomes Dirgha oo. So far, so good. I will move on to the next one. So we did a, oo, oo and Dirgha oo. Now comes a. No, e. Sorry. E is slightly more complicated. It is like, or just wait, because we have just completed two alphabets. So I think it would be good to talk about a little bit of the breakdown. So in the alphabet R, what I am doing is this is the first stroke. Okay. This is the plane.
Imagine a straight line. So that's how a stroke would look. This is the first stroke. Then comes the following stroke, which does not exceed this line. All right. So you have to make sure it stops here. This line keeps going on. And then the middle, you see, this is the middle. So if you imagine a line from here, it should intersect somewhere here. And then from here, you make another stroke, which is also half crescent. And then this is also a quarter of a crescent, this one. And the Shiro Rekha will begin from here. And then comes the straight stroke. But then this ends here. Okay? So that's basically a breakdown of A. And U is very similar. I'm just adding these two strokes. Like if this is the Shiro Rekha, all I'm doing is adding these two strokes together. Then if you join these together, you get U. I've just joined it together. And Dirgha सर U. अभी जो हाँ हेलो सर हाँ जी अभी जो और आपने बनाया एक बार फिर से आप बनाओ एक बार फिर से आप बनाइए एक बार ठीक है. अब मैं विदाउट ब्रेक बनाता हूँ सो दैट आप काउंट करो नहीं स्ट्रोक्स. सर ब्रेक करके अच्छा ब्रेक करके ओके ठीक है मैं ब्रेक करके बनाता हूँ. 1 फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक. ओके. अब आपने जो पहला स्ट्रोक बनाया है ये वाला, ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी यहां से आपको दूसरा स्ट्रोक शुरू करना है. यहां पर अब कलम मिलाइए, कलम मिला के फिर आप क्रेसेंट स्ट्रोक बनाइए. इतना समझ आया? अब इसी लाइन के पास बिल्कुल यहीं से निकलेगा एक और स्ट्रोक जो इस तरीके से दिखता है. ठीक है. कितने स्ट्रोक हो गए? 1 2 3 4. ठीक है. फिर पांचवा स्ट्रोक आएगा यहां से, मैंने आपको बताया था इसकी सीध में होगा ये स्ट्रोक, इस तरीके से. फिर आप देखेंगे जो ये स्ट्रोक है इसमें 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे. तो जो आपका शीरो रेखा से जो डंडी नीचे आएगी वो इनमें मिलनी चाहिए. अब देखिए मिल गई. इतना इतना क्लियर है आपको? किसी और जी को प्रॉब्लम किसी अल्फाबेट में? आई कैन मेक इट अगेन. इफ नॉट फिर मैं ई बनाता हूँ. अब किसी और को क्वेश्चन पूछना है दे कैन आस्क मी राइट नाउ. ओके. फिर से दिखाइए. सॉरी. ऊ. ठीक है. ऊ के लिए सबसे पहले बनेगी शीरो रेखा. You first make the Shiro Rekha to make U. And then from here, what I'm doing is, this is a half crescent stroke. Okay. So, मैं इसको आ की तरह नहीं ला रहा हूं. देखिए, आ में और इसमें क्या फर्क है? अगर मैं ये स्ट्रोक पहला स्ट्रोक नहीं बनाऊं आ में, ये वाला, अगर मैं इसको इतना ही रखूं तो ये ऊ है पूरा. ऑलराइट. अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यहां से बनाना शुरू करूं तो ये बन जाएगा ऊ. मुझे इसमें ये स्ट्रोक डालने की जरूरत नहीं है जो मैं आ में डालता हूं. देखिए आ और ऊ में यही फर्क है.
तो आ जो ऊ है वो बनाना ज्यादा आसान है भी, आ से भी। शीरो रेखा, हाफ क्रेसेंट, हाफ क्रेसेंट। इसको भी हम एक बक्से में डाल सकते हैं। ये बक्से में डालने की जो टेक्निक है ना, ये आपको थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी, बिकॉज उससे आपके अल्फाबेट्स में सिमेट्री आएगी। यू विल हैव अ बेटर लुकिंग अल्फाबेट्स। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट बेटर, कि अगर आपके पास समझ लीजिए A4 साइज की शीट है, तो उसमें कितनी लाइंस आप लिख सकते हैं 2 mm की कलम से। इस तरीके के कैलकुलेशंस जो हैं वो कैलीग्राफर्स करने पड़ते हैं व्हेन दे आर राइटिंग बिगर पीसेस। तो ये बॉक्सेस बनाने इसीलिए बहुत जरूरी है। तो दिस इज क्लियर सो फार। कैन वी मूव ऑन टू ई? Yes, sir. ओके। ई जो है, ई के लिए मैं पहले बेसिक स्ट्रोक्स बताता हूँ। शीरो रेखा हमें पता ही है, सो आई एम नॉट गोना रिपीट इट। उसके बाद आता है पहला स्ट्रोक, विच इज दिस। ये स्ट्रोक भी हमें याद होगा, जो हमने ये जो हम सबसे पहला बेसिक स्ट्रोक है, ये वो है, ये वाला। सो मैंने उसको छोटा बनाया, क्योंकि ई में छोटे की जरूरत होती है। उसके बाद द सेकेंड स्ट्रोक, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक, सॉरी दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक, दिस इज द सेकेंड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक जो है वो जैसे ये आया इधर, और ये ऐसे घूमेगा। ये मैं सिर्फ लाइन बना रहा हूं। और अगर आपको कैलीग्राफी में दिक्कत आती है, तो आप ऐसे लाइन बना के कैलीग्राफी कीजिए, एंड मेक श्योर कि जब आप पेन चला रहे हैं तो ये लाइन आपके कलम के बीच में ही रहे व्हेन यू आर मेकिंग दिस, लाइक दिस। ऑलराइट। फिर उसके बाद आता है, हमें नुक्ता याद है, नुक्ता ये वाला। वी रिमेंबर दिस 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 स्ट्रोक। उसको हमने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना है, थोड़ा सा स्टाइलाइज करना है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लाइक दिस, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहां से जो अगला स्ट्रोक आएगा, दिस इज द थर्ड स्ट्रोक। फोर्थ स्ट्रोक जो है वो एक नुक्ता है, बट थोड़ा खिंचा हुआ, सेम बट स्लाइटली एक्सटेंडेड, लाइक दिस। And then the next stroke is E. This is the last stroke. Fourth, fifth, this one would be your last stroke. मैं एक बार फिर बनाता हूँ, so that it's clear what I'm making actually. Just give me a sec. Um, can you see this? I'm making the alphabet again, E. So E is similar to, if you learn E, you not only get E, you also get the, ya, E, and jha. तो सिर्फ इस एक शेप को सीखने से आपको 4 अल्फाबेट्स कवर होते हैं। तो प्लीज पे अ लिटिल बिट अटेंशन, ऑब्जर्व व्हाट आई एम मेकिंग। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक।
जो थर्ड स्ट्रोक है वो यहां तक तो देखिए सीधा है, यहां तक बिल्कुल सीधा स्ट्रोक है, फिर यहां से वो थोड़ा सा मुड़ रहा है लाइक दिस, फिर यहां से मैंने आपको बताया था नुक्ता जो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, यहां तक आएगा ये, फिर यहां से इसको ऐसे बनाइए, और ई बनाने के लिए यहां पर कलम रखिए इधर, एंड देन इसको स्लाइटली ऐसे लेकर आइए छोटा सा, एंड देन फिर यहां से सीधी लाइन, यहां से सीधी लाइन यहां पर आके थोड़ी सी घूमेगी बस, तो ये आपका बन गया ई। इज दैट क्लियर? या फिर मैं दोबारा बनाऊं? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई वोंट माइंड मेकिंग इट अगेन। नाउ वी हैव moving on to the next alphabet. We are done with E, U, and A. Now comes A. Shirorekha. This is the first stroke in every alphabet. Now, अभी मैं breakdown बता रहा हूं, बाद में मैं पूरा बना के दिखाऊंगा। So यहां पर हम क्या करेंगे, हमें ये वाला स्ट्रोक याद है, the straight line stroke, this one. All right, this one. We remember this one. तो ये हम यहां पे दो लाइंस बनाएंगे, ये स्ट्रेट वाली, एक दो। ऑल राइट, जो पहली लाइन हमने बनाई है वहां पर एंड में हम अपनी कलम टिकाएंगे और यहां से एक लाइन यहां तक आएगी। ऑल राइट, फिर यहां पर थोड़ा सा कर्व है। अब आप इसको पूरे को एक साथ अगर बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और दूसरा स्ट्रोक जो है वो यहां तक आएगा ऑलमोस्ट, फिर यहां से ये थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़ेगा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर, और डू यू वांट मी Yes. टू मेक इट अगेन? ये क्लियर है सबको? ओके Yes. सर। ओके, so let's move on to the next one then. A is done. O is also done because उसमें भी आ आता है, तो आपके वावल्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वावल्स मैं दोबारा लिखता हूं, एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज वावल्स आफ्टर द क्लास, और उससे भी पहले आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस कीजिए एक बार लिखने की, so that it's clear to all of you. So let's begin. There's only 5 minutes left, 7 minutes left in the class. So let's make sure कि हम सारे अल्फाबेट्स एक एक बार एटलीस्ट लिखें, या फिर अगर दो सिमिलर वर्ड्स हैं तो उनका एक फॉर्म आपको लिखना है अभी, एंड यू हैव टू शो मी इफ you have done it. So let's start. Shall we? Shall we start? Can I hear Yes, yes sir. or no? Okay, great. Yes, sir. So let's start with A. Please send it on WhatsApp when you are done. You can send it after the class as well. So, because if I don't get to see what you make, I won't be able to suggest changes. And what happens, calligraphy, when people are learning, a lot of times they
learn wrong strokes and then they remember those wrong strokes. So you have to unlearn as well while you're learning. So make sure you do both the things. Ah, ah, oo, oo, eh, oh, oh. So there's no space left there. और अगर दो मात्राएं लगानी है तो मात्राएं इस तरीके से कुछ लिखी जाएंगी. ये सिंगल ओ और ये डबल ओ के अलावा अम आ हम वी कैन इमेजिन इन सिमिलर स्ट्रोक्स. सो सिर्फ हमें ये दो नुक्ते लगाने हैं, एक इधर और एक इधर. तो इस तरीके से कुछ आप वावल्स को लिख सकते हो. और अगर मैं छोटे साइज में लिखूं तो you can get a better idea of how this thing is actually uh, equal. You know, all the alphabets are equal. मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया है. सो ये जो स्टिक मार्कर है, आई हैव यूज्ड अ ब्लेड टू कट to make a small cut in it. Can you all see it? So what it does is Yes, sir. it gives you a beautiful nib to work with. So it would be like a slit stroke. I don't know if you can see, but it would be like this. Two parallel strokes together. Yeah, two parallel strokes together. So that's how you make it. You know, this is almost like you can do it with a sharp blade. I prefer using. But I think there are available like this in the market. Yeah, there are, but if you are buying a specially crafted pen, it would be much more expensive than stick markers, because stick marker is 10 rupees, and you might have a blade at your home which you can use to make the slit. But if you buy a scroll nib, I mean, this is called a scroll nib. You usually get a metal nib like this. It's called scroll. They can range from 100 rupees to 10,000. So the it's quite expensive at some places. Okay. So सर एक बार और उस पेन को दिखा सकते हैं किस प्रकार से आपने काटा था? अच्छा, देखिए. Wait.
Can you see it clearly? No, sir. No? I'm sorry, but uh, अब शायद हो सकता है क्लियरली थोड़ा सा दिख रहा हो. जी सर, समझ गए, कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने क्या किया है ना कि जैसे अब समझ लीजिए ये पेन की निब है, ये निब है आपके पास, सॉरी, ये आपकी निब है, तो इसमें बस इतना सा हिस्सा आपको काटना है, like this. Just a small cut. Just a small cut, not very deep. So now I will try to make all the alphabets again, and we will wrap up the class after this. So here we go. For this one, I would like to bring my camera down so that you all see clearly. This is how you can make all the vowels at once. And हम like ऐसे club करके लिखना कैसे होता है, we will learn in probably the next week's class. क्योंकि जब आपका letter form better होने लगेगा, once you start writing in a better way, that's when we can move on to more advanced version and writing words or sentences. But make sure to practice a little bit, and send me the homework on the WhatsApp group. And if you want to send me directly, that's also fine. But just share what you have done so that I can tell you where you need to improve. So it can be better for both you and I. Otherwise, I might be repeating the same thing again and again. So to reduce that, what I usually do is ask people to send me what they have done. So I would be waiting eagerly what you have all done, and I would really want to see, because till now very few people have shared what they have done. Uh, I know there are some problems with the calligraphy pen, sourcing the ink and everything, and there are some people from foreign um, land, so things might be slightly different for them. So please reach out to me. I am available, and ask me questions. I'd be very happy to answer. So just make sure you just reach out to me. We can wrap up the class now. And tomorrow,
We will begin with consonants and we will try to cover half of it. So make sure you complete this and send me your practice pack or practice sheets. I'll Thank see you you so tomorrow. much, Sorry? Yes, sir. sir. Yeah. Thank you so much, Mayank, sir. Oh, Thank you so welcome. much, sir. Welcome. Uh, See you tomorrow. Thank you for such a wonderful session. If there are any questions anyone wants to ask, you may please ask. Yeah, please. There are few new participants. They want to ask about pens or anything. They can talk to sir. हेलो सर। Hello. Yes. Hi. हाँ सर, वो जब हम लिख रहे हैं सर, वो स्टिक के मार्कर से सर, तो जो वो कट मतलब वो क्रॉस टाइप का जो अभी आपने लिखा है और हम्म। उसमें वो मतलब सर वो मतलब उस तरह से नहीं बन रहा है सर। मैं हाँ आपको वो अच्छा, वो थोड़ा सा आपको देखिए, हमको क्योंकि आदत क्या होती है पेन को राइट, जैसे हम स्कूल में हम सब ने सीखा है, मैंने भी वैसे ही सीखा है, पेंसिल और पेन्स। तो हमको आदत नहीं होती इस तरीके का, जैसे ये निब है, ठीक है, इसको यूज करने की। तो अब मैं अब कोशिश करके आप ये देखिए कि आप किस तरीके से ये पतले स्ट्रोक्स, ये मोटे स्ट्रोक्स ला सकते हैं। आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो एकदम से नहीं आएगा। आपको कोशिश क्या करनी है कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये हमेशा इससे अलाइन करके आपने लिखना है। -45 डिग्री, 45 डिग्री का जो मैं आपको एंगल बता रहा हूं बार बार, आपको हमेशा एंगल यही फॉलो करना है। सर मार्कर से वो नहीं हो पा रहा है सर। देखिए मैं मार्कर से ये करके देखिए। दिखाता हूँ आपको। प्रीतम जी ने बहुत अच्छा लिखा है। ये पहला वाला किसने भेजा है? एडी। सर मेरा है सर। आपने भी अच्छा लिखा है। तो एक चीज देखिए, मैं आपको एक एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ जो आपने मिस आउट किया। कैलीग्राफी एकदम से नहीं आती। और अगर आप जब तक जैसे ट्राई नहीं करेंगे, समझ लीजिए, अगर मैं बोलूं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे पेन के साथ कि वो कैसे चल सकता है, वो कितना एंगल पर आप उसको चला सकते हैं, और हमेशा ये एंगल चलाना भी मुश्किल है, और वो एकदम से नहीं हो। इसके लिए स्लाइटली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अगर वो इस वक्त नहीं हो रहा तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जरूर होगा। आई गारंटी यू दैट। अगर आज आपकी पहली क्लास है तो वो आज थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा बनना, बट आई अश्योर यू कि वो 2-3 दिन में आप बनाना शुरू कर दोगे। सो जस्ट बी पेशेंट एंड डोंट जज योर सेल्फ फॉर मेकिंग अ रॉन्गर स्ट्रोक, बिकॉज इट्स फाइन, एवरी वन इज लर्निंग, इवन आई एम लर्निंग नाउ। सो you're always learning and don't be ashamed कि आपका अगर स्ट्रोक गलत आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि this is not a competition. We are all here to learn. So don't worry about getting your stroke strong. आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको सिर्फ इस एंगल पे लिखना बहुत आसान लगने लगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस तरीके की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एक ही तरफ एंगल रखिए पेन का और बस उसको घुमाते रहिए पेज पर, और इससे बहुत सुंदर कैलीग्राफी भी होती है। मतलब अगर हम ट्रेडिशनल कैलीग्राफी ना देखें, हम देखें बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल कैलीग्राफी। अब देखिए मैं एक छोटी सी कॉम्पोजिशन बनाता हूँ।
और इसमें मुझको अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए कि मैं क्या बना। आई होप। कोई गेस कर सकता है ये क्या है? कैन एनीवन कृष्ण गेस? सर, कृष्ण। फैबुलस। आपको अक्षर जो है, अम, जिसे हम बोलते हैं ना कि किस आपको बताना है या फिर एक्सप्लेन करना है, अक्षरों की जरूरत तो होती है। लेकिन कैलीग्राफी एक ऐसी चीज है ना, उसमें अक्षरों की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ चीज को बयान करना चाहते हैं तो। कैलीग्राफी इज नॉट जस्ट अक्षर, इट्स अ वर्ल्ड बियॉन्ड अक्षर, एंड यू कैन क्रिएट थिंग्स विद जस्ट कैलीग्राफी स्ट्रोक्स। इसमें कोई भाषा नहीं है, इसमें कोई लिपि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मैंने एंगल पेन को यूज किया है एक इंसानी छवि बनाने के लिए। और आप मुझे कृष्ण जी का चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है या उनका रथ बनाने की जरूरत नहीं। मैं एक सिंपल उनका कैरेक्टर पकड़ के, एक मोर पंख मैंने चुना, बांसुरी मैंने चुनी, तो ये दोनों चीजें आपको बता रही है कि ये कृष्ण जी, राइट। तो ये स्ट्रोक्स भी कुछ इस तरीके से ही हैं, यू नो। आप आपको धीरे धीरे अंदाजा होता रहेगा कि आ, ये स्ट्रोक से सिर्फ अक्षर नहीं बन सकते। इनमें आप बहुत सारी चीजें इमेजिन करने लगो। सो फॉर नाउ जस्ट immerse yourself in the basic strokes, and then we can carry it forward जैसा भी आपका होगा। And I assure you, by the end of this course, everyone would be able to write beautifully in Devanagari. At least I hope that. So I'll see you guys tomorrow. Let's wrap Thank it up because yeah, we are way ahead of the time. you for a wonderful session and acquainting us with the creative world of calligraphy. Thank you. See you tomorrow, same time. Thank you so much, everyone. Thank you, Okay. sir. Bye bye. Okay. Take Thank you, care. sir. See you tomorrow. Bye. थैंक यू सर। Thank you. And send me your homework. Okay. See you tomorrow.